Hello, welcome to day 36 of DSA challenge, and in today's video we will solve question related to linked list and to find a key in the linked list. Okay, so let's start with the question, and the question is search in linked list, right? So this is a very simple question because we are doing the same approach as we do for traverse the linked list, right? So what the question is saying, given a linked list with the head node and a key, the task is to check if the key is present in the linked list or not. So simple, we need to find that this key. So let's suppose for input 1 the key is 3, and in this linked list are we able to search key 3? Yes. At the third node we have the key 3, so we are returning the output as true. So when we solve this question, we just do simple one thing, that is while head, it means जब तक कि head हमारा नन नहीं हो जाता या null नहीं हो जाता तब तक हमें देखना है, and एक कंडीशन है कि हमें सर्च करना है, हमें इक्वल टू करना है किसके, की के बराबर, और हमारा कोई भी डेटा अगर उसके इक्वल हो जाता है देन वी विल रिटर्न दिस ट्रू. सो हमने सिंपल ये किया, इफ हेड डॉट डेटा इज इक्वल टू की देन रिटर्न ट्रू, और हेड को आगे बढ़ाते चले जाओ एंड हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, और एट द एंड अगर हमारा लूप खत्म हो जाता है और हम तब भी अपनी की को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं देन वी विल रिटर्न फॉल्स. और एक चीज और लिखी हुई है, दैट इज इफ हेड इज नन रिटर्न फॉल्स. इट मीन्स अगर हमारे पास कोई भी हेड एग्जिस्ट ही नहीं करता है देन वी विल सिंपली रिटर्न दिस फॉल्स. तो ये हमारा एक एज केस हो गया. तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी स्लो एंड फास्ट पॉइंटर अप्रोच, and that is a very important approach in our linked list. So we will see that, and I hope I was able to explain this question well. And with this, let's learn and grow together. मिलते हैं next video में. Thanks for watching. Bye bye.